वेल गाइस, तो आज की वीडियो में मैं डीमन स्लेयर्स के सारे हाशिरास को ड्रॉ करूंगा और मैं काफी टाइम से इसको बनाने का सोच भी रहा था एंड ये काफी चैलेंजिंग भी होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये ड्राइंग शीट ब्रूस्टो A4 साइज की 200 GSM है एंड अपना स्केल और पेंसिल लेते हैं और कुछ प्रोपोर्शंस लाइन बनाते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ 4 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर पे एंड अब यहाँ से मार्क करूँगा 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर पे एंड सेम इस साइड भी मार्क करना है 4 सेंटीमीटर, 15 एंड 26 सेंटीमीटर पे एंड अब यहाँ सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड जो पॉइंट्स हमने मार्क किए थे उन सारे पॉइंट्स को इस सर्कल के साथ लाकर ज्वाइन कर देना है। We just muscled up, this game spin, no one gotta tighten up, gotta muscle up, or you will get stuck in this game. एंड अब जितने भी पार्ट हुए हैं सब में मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा ओवल शेप में, जिसमें मेरे सारे कैरेक्टर्स का फेस आएगा। तो रेफरेंस फोटो को देखकर मैं फेस के हिसाब से उसी पोजीशन पे सारे सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड रेफरेंस फोटो का लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोपोर्शन लाइंस एंड सर्कल्स तो सारे बन चुके हैं। रेफरेंस को देख के ऑब्जर्व करके अब मैं आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आउटलाइन बिल्कुल मैं अच्छे से ऑब्जर्व करके बनाऊंगा एंड मैं सेंटर से ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा, जो कि हमारा कैरेक्टर है कागाया एंड ये लीडर है सारे डीमन स्लेयर के हाशिरास का। एंड डीमन स्लेयर के फैंस जानते हैं कि हाशिरास डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है और हर एक हाशिरा का अपना एक यूनिक फाइटिंग स्टाइल है और पर्सनैलिटी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी पर्सनैलिटीज को अपनी ड्राइंग में कैप्चर कर सकूं। Everyone calling on progress is stalling. My stock is been slowing, my life it ain't boring. Ain't no more hitting me up when you lose. When it's time to wake up, see you hitting the snooze. When they ask me how we leveled up without us getting stuck, we just muscled up, this game spin, no one gotta tighten up, gotta muscle up, or you will get stuck in this game. Feathers been calling, my enemies stalling, my people been balling, my team we been wildin'. Canada 100, we use basic tools. Strategies moving where we gotta move. There wasn't no option, no time on the clock, and no setting it back, and we gotta get profit. I'm standing on top of the glory, the road. We was just rebels and do what was told. When they ask me how we leveled up without us getting stuck, we just muscled up, this game spin, no one gotta tighten up, gotta muscle up, or you will get stuck in this game. I'm ballin' on top of that mountain, I'm on and I'm calling my mom and tell her I'm good. I'm surrounded by family like back in the hood. I was falling from grace, I was misunderstood. Hey, the pressure will sit you right down, but I stood up. I mean what I say and I say what I mean. On the balcony screaming, they just let me be. We had to slow it down, what goes around comes around. Oh, the frequency different now, I was going through different rounds. Hey, it's crazy, the progress is hitting now. Ain't no sitting and lost and found. I found what I lost in a minute now. I was on the wrong path, I admit it now. My only option was to get it now. I got it on both and I
learned from the losses. My failure was friendship, I saw it was costing. Started like everyone had certain tools. Only difference is I knew what to do. Now everyone calling when progress is stalling. My stock is missing, my life getting boring. Ain't no more hitting me up when you lose. When it's time to wake up, see you hitting the snooze. When they ask me how we leveled up without us getting stuck, we just muscled up. This game spent, no one gotta tighten up, gotta muscle up, or you will get stuck in this game. Here comes trouble, putting on a show. Like a domino, I fall. Another bottle, don't know what to say. Send me on my way to you. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. And you say it's a one-night thing, but I want something more than that. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. Eyes wide open, holding out for you. Tell me that it's true. Oh, did you notice? I saw you over there, looking like a heartbreaker. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. And you say it's a one-night thing, but I want something more than that. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. और यार आउटलाइन तो कंप्लीट हो गई है और इसको कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। तो यार इसके लिए तो वीडियो को लाइक कर दो और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। एंड इंकिंग भी मैंने कर ली है कंप्लीट और इसको दिखाना ज़रूरी भी नहीं है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कलरिंग। तो कलरिंग में इन अल्कोहल मार्कर्स का यूज़ करके करूँगा, तो देखते हैं कि कैसा बनता है, कैसा रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मैं ग्रे कलर का डार्क शेड लेकर कगाया के जो हेयर्स हैं उसमें एक बेस लेयर कर रहा हूँ। एंड उसके बाद ब्लैक कलर लेकर मैं शैडो एरियाज को कर रहा हूँ हेयर्स में। एंड अब फेस में पहले मैं स्किन टोन से सबसे पहले बेस लेयर कर रहा हूँ पूरे फेस में। एंड उसके बाद मैं डार्क शेड लेकर जो फेस में शैडो एरियाज हैं उनको कलर करूँगा। एंड इसके फोरहेड पे जो कर्व्स का निशान है उसके लिए मैं पिंक कलर का यूज़ करूँगा, लाइट एंड डार्क शेड का। एंड बाकी आउटफिट में जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर लेकर मैं कलर कर रहा हूँ।
एंड इसी तरह से मैं सारे कैरेक्टर्स में कलर करूंगा जैसा रेफरेंस फोटो में है। पहले स्किन कलर लेकर स्किन में जो लाइट एंड डार्क शेड है उसको कलर करूंगा। उसके बाद जो इनका हेयर या क्लोथ है, जो जो कलर हैं सारे कलर्स में रेफरेंस को देख देख कर उस हिसाब से करूंगा। तो देखिए ड्राइंग को और ऑब्जर्व करिए कि मैं किस तरह से इसको कंप्लीट कर रहा हूँ।
एंड यार इसी के साथ मेरा आर्टवर्क फाइनली बनकर कंप्लीट हुआ काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत के बाद। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट करके बताएं कि आपका सबसे फेवरेट हाशिरा कौन सा है एंड नेक्स्ट ड्राइंग के लिए मैं क्या ड्रॉ करूं। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।